So dear students, after watching the previous video, you must have understood that muscular force is a type of contact force where force is applied by touching the object. Muscular force एक तरह का contact force है जहाँ पर force टच करके अप्लाई किया जाता है और वो टच जो है that can be done directly or through any connector. आपको मैंने एग्जाम्पल भी दिखाया था. वी कैन लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर बाय होल्डिंग इट. यहाँ पर हम डायरेक्टली बकेट को टच करके फोर्स अप्लाई करके बकेट को लिफ्ट कर रहे हैं. आपको मैंने ये एग्जाम्पल भी दिखाया था जहाँ पर हम बिना डायरेक्टली टच किए कनेक्टर के थ्रू मस्कुलर फोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे फेचिंग वाटर फ्रॉम वेल एंड वाइल बोटिंग. Now I also showed you some muscular force used by humans. जैसे कि ये लेडी मस्कुलर फोर्स इस्तेमाल करके she was lifting the sand on her head. This man was using muscular force while pedaling the cycle. अपने पैर के मसल्स को यूज़ करके ये पेडल मार रहा था साइकिल पे. This man was also using muscular force while gymming, doing exercise. These kids were also using the muscles of their arms and legs to ride the bicycle. Now children, I also showed you the examples of muscular force used by animals. ये जो horse है, this horse is applying force by using its muscles. This bullock cart is also being pulled by using the muscular force of the bull. So now you can easily say that the force applied by the muscles of human beings and animals to carry out various physical activities is called muscular force. Force is applied by using parts of the body. Okay.